Yes. Yes. The next page also in next photograph. Wait. One by one. We are getting the right one. Yeah, next. Yes, look. Yeah, next. Look, both of you that side. This side. Both of you. Look that side. This camera lens. Both of you. Yes. Yeah. And that's the last one. ये अकेली एक ऐसी प्रेस है पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जिसमें एक अवार्ड है प्रिंट इंडस्ट्री का जिसको कहते हैं सापी इंटरनेशनल यस SAPPI इंटरनेशनल सापी इज पेपर मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड फाइनेस्ट लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन साउथ अफ्रीका बेसिकली साउथ अफ्रीका इन्होंने एक अवार्ड इनिशिएट किया है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल विच इज इंटरनेशनल प्रिंटर ऑफ द ईयर और ये जो अवार्ड है इसको अपनी इंडस्ट्री में एक ऑस्कर का रुतबा था तो इसकी जो ट्रॉफी होती है उसको एलिफेंट कहा जाता है शेप ऑफ एन अफ्रीकन और प्रगति अकेली एक ऐसी प्रेस है पूरे ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया जिसने ये अवार्ड 2 बार जीता पिछली बार जो प्रगति ने अवार्ड जीता और कैलेंडर जो कि 2008 में बना था और अनफॉर्चुनेटली वो कैलेंडर भी हम नहीं बनाया उस टाइम जो अवार्ड मिला था कैलेंडर को उसका थीम था सिम्बल्स ऑफ लिविंग और इस बार जो कैलेंडर है इसकी थीम है फ्यूचर जो वजह है फ्यूचर वाइज की थीम बनाने की वो ये है कि जब इन्होंने 2008 में अवार्ड किया then comes the second part of this calendar टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो गई लेकिन अब एक ये भी है कि अगर हम लोग जो कर रहे हैं आज की ज़िंदगी में वही करते रहे तो डेफिनेटली नॉट रीच दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज एन आइडियल स्टेट इफ द प्लैनेट कंटिन्यूज टू सर्वाइव बट इफ द प्लैनेट डजंट सर्वाइव व्हाट हैपेंस so what we can do is to be future wise, right? And that's why the pun in the theme future wise. Okay, so be wise for the future. Coral reefs are an extremely important marine feature. They contain a huge range of biodiversity and give and sustain life of many aquatic life forms. It's said that just a 1 degree rise in temperature of sea water would actually lead to there is a certain chemical process. There is a certain algae that the corals feed on. That algae would die with just a single degree of rise in temperature. If that algae dies, the corals start to die out. When the corals die out, they become white. Yeah, this comes to that. And already about 20% of the marine coral bells have died out in various parts of the aquatic world all over. So the पूरा initiative at no cost to us. मतलब हम इसके लिए चार्ज नहीं करते. This is also our showcase for design as it is. Yes, it's a platform for us. तो इस वजह से हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं. जब इन्होंने 2008 में अवार्ड जीता तो नरेंद्र जी द चेयरमैन ऑफ IIT gave me just to meet me after winning the award. तो बोले यार राजीव अपने साथ में कैलेंडर आप ऐसे सर अभी ये कैलेंडर ने अवार्ड जीता है 2009 को मैं नहीं बता पाऊँगा तो फिर आपको 2010 का बता तो मैंने कहा ठीक है मैं 2010 का बता तो उस हिसाब से इन्होंने मुझे 2 साल का वक्त दिया 2008 में बोला कि 2010 का 2009 की शुरुआत में हमने इस कैलेंडर पे सोचना शुरू किया और करीब 6-8 महीने की मेहनत लगी इसको मुकाम तक पहुँचाने में और एज इफ दे आर डेड दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे वुड लुक व्हेन दे डाई आउट आई मीन इफ यू सीन दोस skeletons you would know this what it looks like. So you have some fish floating in the water with dead corals around them. It talks the story. But if you take
preventive action today, you can still continue to see the colors there. These are two colors. But again, Pragati, you move your hand across the sheet. For each different textural variation in the actual marine life, you'll find that they've been able to texturize it with an appropriate texture. So you've got something raised here, you've got something rough here, you've got something glossy here, based on what that actual texture for that particular life form is. Yeah, so this is, and then there is a story here for you tonight. And of course, the dates. And then, global warming, we were talking on the same subject. Antarctica would go because they projected by the year 2100, 2100 सदी के अंदर आपका जो सी का जो समुद्र का तापमान है 5 डिग्री बढ़ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस rise in temperature. Now when there is a 5 degree rise in temperature, obviously the snow starts melting because they are maintaining a very critical equilibrium right now. So when that happens, if all these snows of Antarctica melt, then we just put an irony here, we said, okay, let's put some ice cubes to save them, I mean, the emperor penguin and the king penguin go away. So what can we do to save them? So from our perspective, we said, okay, if nothing else, just give them some ice cubes. So, you just sort of, it's like a little mock at And yes, of course, they use special inks, special colors, special textures. Then comes the story of conservation of wildlife. And tiger is obviously one of the most important. And then there's William Blake's poem, Tiger, Tiger, Run and Ride. Sorry? Yeah, Tiger Woods. And yeah, he's burning bright for another reason, but yeah, so what the beauty of this sheet is, if I expose it to sunlight for, let's say, Down the road from each other. Burn right. few minutes, and let's say this sheet of calendar is up on the wall in your house during the day, and then the night falls. Okay. Shooting. So yeah, that's what this calendar is.